So very good evening all of you. Hope you all are doing good. So welcome back to the Lead Gate channel. And you know very well that in the Lead Gate, especially for the mechanical branch student, that is mechanical engineers, GATE 2021 aspirant, here we are going for Maha Revision. And this Maha Revision actually is specially for the GATE 2021 aspirant, okay, GATE 2021 who are from mechanical branch. And you know very well that this Maha Revision we four faculties are taking care of. That is Minu Gupta ma'am, Maruti Tiwari sir, Rohit Sinha sir, and myself Amulya Ratan. We four faculties are taking care of your complete Maha Revision. In this, myself, I'll be taking care of your aptitude revision, and remaining all technical as well as non-technical will be handled by the other three faculties. So subscribe this channel LeadGate so that you may not miss any of the live classes, any of the revision classes of mechanical branch. Okay, technical as well as non-technical. Very good evening, Lagbir. Very good evening. So moving further, you know even that this Maha Revision actually was started on October 12th and this will continue up till 31st of January. So already if you have missed some of the live classes, don't worry, you can watch those classes on the YouTube. Okay, and further from today onwards, if you subscribe this channel from today onwards, you can watch the live classes which will continue up till 31st January. And you know that if you have not taken this Unacademy subscription yet, so now it is the time, at least now you can take the subscription. If you are GATE 2021 aspirant, you can go for subscription of 1 month or 3 months. 1 month subscription fees will be 5,500. If you are opting for 3 months, the 3 month subscription fees will be 13,750. But let me tell you that if you use this code, that is AR10, then you will be getting the discount in your subscription fees. For 1 month, no need to pay 5,500. 1 month subscription you will get in just 4,950 by using this discount. Yes, 9 p.m. class is also there, continuation, and 10 o'clock it is a special, I think special class is also there. 10 o'clock questionnaire for the same data sufficiency which we are discussing, Lagbir. And similarly for 3 month subscription, when you use this code AR10, no need to pay 13,750. You will get the discount in that. 3 month subscription you can get in just 12,375 by using this code, that is AR10. But if you are GATE 2022 or 23 aspirant, you can opt for 18-month subscription or else 2 years, that is 24-month subscription. And 18-month subscription fees is actually 38,500, but if you use this code AR10, this 18-month subscription you will get exactly in 34,650 by getting the discount. And for 24 months, instead of paying subscription fees at 44,000 rupees, you can use this code AR10, and this subscription you will get 24 months in just 39,600. So use this code maximum and even share this code with your friends so that they can also use this code to get the discount in their subscription fees. Because let me tell you, this code is valid in all the courses available on Unacademy. So moving further, the student who are for GATE 2022 or 23 aspirant, for them announcement is there that the batch A has been already started. If you have missed the special classes, free classes of these top faculties, okay, already 7 classes they have taken, okay, the introduction part, the roadmap. So you can just download the Unacademy app. Okay, after downloading the app, they will be asking you the access code to watch the free live classes or free special classes. You can use this code AR10 there also to just access the free live classes. And if you want to join this batch A has been already started. That was on 28th of December. So only 2 days classes has been done. Every day evening 6 o'clock on Unacademy app you can watch this class. But if you want to watch this class, it is in English as well as Hindi, both the languages. And these top faculties, that is Jitendra Gill sir, Praveen Kulkarni sir, Akash Tyagi sir, Rajiv Singh sir, these top faculties will be taking care of this batch which has started. And for this you have to take the subscription, and more the top faculties will be taking care of your batch. Moving further to the today's topic. What is today's topic? Today's topic is data sufficiency. So this is an important topic again for all the competitive exam, not only for GATE, even for engineering services, okay, and the various competitive exam. What is data sufficiency? So as the topic name itself suggests, that
they are asking you whether the data is sufficient or not. Okay, so here they have given, please read the direction carefully before answering the questions. Okay, so what you have to do, they will give you a question followed by statements. Two statements will be given, one question followed by two statements. You have to check that which question the question answer will get by which statement, either with statement 1 or with statement 2, or else none of the statement we can get the answer of this question. So whether the data of statement 1 is sufficient to get the answer of the question, or statement 2 data is sufficient to get the answer of the question. So this, based on this, you have to answer the given question. So for before going for any DS question, DS, from here onwards, data sufficiency, I'll be calling it as DS. So from here onwards, the DS name means you understand that it is data sufficiency. In DS question, remember that before answering any DS question, read the directions given over there very carefully, because based on the directions you have to select the options. Okay, like for one standard direction, I can say, you can see on the screen, one standard direction is given. Select option A if statement 1 is sufficient to get the answer. अगर statement 1 से आपको आंसर आ रहा है तो ऑप्शन A सेलेक्ट कीजिए. Select option B if statement 2 is sufficient to get the answer. अगर statement 2 से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, statement 2 is sufficient to get the answer of this question, select option B. Select option C if statement 1 and 2, just observe this, and 2, and means together, means combining both the data, combining the statement 1 and statement 2 data. If we get the answer, then select option 3, and if none of the statement is sufficient to get the answer, then select option 4, that is D. Are you getting me? So like this they will give you the direction. So read the direction carefully before going for any DS question. So here, for example, I have given you one question, what is the value of A? This is the question. Okay, and further two statements are given, A square is equal to 49, and second statement is 16 is less than A is less than 18. So according to you, what should be the answer? Which option you would select? Option A, option B, option C, or option D? According to you, you tell me which option you are going to select. If statement 1 is sufficient, A option. If statement 2 is sufficient to get the answer of the given question, B option. If both combining, you will get, combining means combining both the data, if you get, select C, and if none of the statement is sufficient, select option D. So Lagbir, say A, first statement is sufficient to get the answer. Okay, others, what is your answer? Others, anyone who can answer? Okay, so this question I am explaining, further question also I'll explain, but when brainstorming starts, as on the screen brainstorming comes, you also try to answer the questions. Okay, so let me explain you here. The first statement, they say that A square is equal to 49. So from this statement, what you can derive? What is the value of A? What you can derive the value of A? A can be plus 7, or A can be minus 7. Are you getting confirm answer here? Are you getting confirm answer for A? We are not confirmed. A can be plus 7, A can be minus 7. We are not getting a confident confirmed answer with the statement. It means the statement is not sufficient. Clear? Because in maths normally we write that A is equal to plus minus 7. No doubt we write like this. But we are not confirmed whether A is plus 7 or A is minus 7. So with the first statement we are not getting the answer. And with the first statement we are not getting the answer. Now we'll proceed to the second statement. Second statement says that 16 is less than A is less than 18. So what is A value? What is A value? It can be 17. A can be 17. A can be 17.5. A can be 16.9. Because A can be anywhere in the middle. They are saying that 16 is less than A is less than 18. So A can be anywhere in the middle. So here also we are having so many options. We cannot get the confirm answer. It means here, let me tell you, you have to go for option D, that none of the statement is sufficient to get the answer. Am I clear? Together, this option C, when you will get, together when you will get, that also, if you have the doubt, that also I can explain. See, together answer when we can get. Consider in the second statement they must have given
6 is less than, A is less than 18, sorry 8, then you can say that C option will be correct. Combining both the data, you will get A value will be definitely plus 7. So C is actually combining both the data, statement 1 as well as statement 2. Okay, so next question, let's see the next question so that it will be more clear. Now here they have given you the question, is x greater than 48? First option, x is less than minus 8, and second option, x is greater than 1000. So according to you, which option you will select? If first statement alone you are getting the answer, select option A. Second statement alone, data is perfect to get the answer for the question, select option B. If combining the first statement and second statement will get the answer, select option C. If none of the statement is sufficient to get the answer, select option D. So Lagbir says D. Is it? Lagbir, think. I am giving you the time, Lagbir. Okay, let us understand. Is x greater than 48? What they are asking you, is x greater than 48? So they are not asking you the x value. They are just asking you, is it greater than 48 or not? Just you have to give a reply in yes or no. If you are getting confirmed yes, it means the data is sufficient. If you are getting confirmed no, then also data is sufficient. If you are having the doubt, it can be greater, it cannot be, then you can say data is not sufficient. So let us proceed to the statement 1. X is less than minus 8. So is x greater than 48? If x is less than minus 8, is x greater than 48? No. So here you are getting confirmed answer no. So here option A is your correct answer. No doubt. Yes, Devya. Dhanadev, yes, exactly. No, you are getting a confirm answer. See, no is also one answer. DS, remember one thing, what is the answer is not important. Whether you are getting confirm answer or not, that is important. So here we got confirm answer no. So no doubt this is our first option is correct. No doubt, if you take the second statement, x is greater than 1000. Definitely, Lagbir, I'll explain once again. X is greater than 1000. Now, is x greater than 48? Just by seeing the second statement, you can say that yes, x is greater than 48. So here you are getting confirm answer yes. Means here, if any in the direction, if any such option they must have given, like option E, like if 1 alone or 2 alone, both are sufficient, then select option E, then we can go for that. But here, based on these given option, we have to select option A. Lagbir, try to understand what they are asking is whether the data is sufficient to get the confirm answer or not. Here, question was, is x greater than 48? Now, did you have the breakfast today? Did you have the breakfast today? So, if you are having the doubt, don't know sir, maybe yes, maybe no, means the data is not sufficient. Okay, if you are confident, either no you said or else you said yes you said, it means the data is sufficient. So here they are asking, is x greater than 48? According to first statement, you are saying confirm answer no, because x is less than minus 8, so definitely it is not greater than 48. So confirm answer no means first statement is sufficient to get the answer. And with the second statement also, that is what I am saying, that if they must have given such option like 1 alone or 2 alone, both are sufficient, you can go for that option. Okay, so 2 alone is also sufficient, because with 2 alone also you are getting a confirm answer yes. Is it clear, Lagbir, now? So anyhow, this was, I have designed with 4 options, because GATE they give you 4 options, but normally you can go for 5 options as well. 5 options because there can be one option that 1 alone or 2 alone. In the 4 option, what you can do is, yes Lagbir, in the 4 option what you can do is, with the first statement if you are getting the answer, don't see the second statement. Don't see the second statement, select option A, proceed further. But they can give you 5 options as well. See here the direction I have given.
Read this direction very carefully, because based on this you have to answer the further question. Here 5 options are there. Select option A if statement 1 alone is sufficient but not the 2 alone. मतलब once फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको आंसर आ जाएगा लेकिन सेकंड अलोन से नहीं आएगा, तब ए सेलेक्ट करना है. Select option B if statement 2 alone is sufficient but not the statement 1 alone, then B. Are you getting me? ध्यान देव. डी. यस, डी यहाँ पे है. ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. यस, ध्यान देव. एग्जैक्टली. अगर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा होता, ये डायरेक्शन दिया होता, तो वी मस्ट हैव ऑप्टेड फॉर डी. ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. ओके. एंड थर्ड इज सी ऑप्शन. व्हाट दे आर सेइंग, both statement together means combining both the data, we can get the answer. Select option C. And if none of the statement is sufficient, select option E. This direction is clear, everyone? So based on this direction, can we go for the question? Okay, so just clear this direction. Anywhere if you feel that you forgot the direction, you just remind me in the chat. I'll once again repeat the directions. So let's see the question. So here is the question. Brainstorming 1 means, yes, Lagbir, yes, Dhyandev. So brainstorming 1 means you have to try the answer for this. Tell me, how much is 20% of a certain number? Okay, two statement. First statement, 10% of the number is 5. Second statement, 40% of twice the number is 40. Now, just now you have read 5 options. Based on that direction, you tell me out of those 5 which one will be your answer. So Lagbir says D. D means alone 1 and alone 2 is sufficient. D option was alone 1, alone 2. C was together, combining both of them. A was alone 1, not 2 alone. B was alone 2 but not 1 alone. And E was none of these. I am reminding you the option how. A, you can select option A if 1 alone is sufficient, not the 2. 2 is not sufficient. Bajrangi says good evening Bajrangi. B option you can select if 2 is sufficient but not the first statement. C option you can select if 1 and 2 together is sufficient. Together, combining both the data. D option you can select if 1 or 2. Or means 1 alone is also sufficient, 2 alone is also sufficient to get the answer. And E option you can select if none of the statement is sufficient to get the answer. Rudresh says A. Rudresh, answer is A. Lagbir, answer is D. Bajrangi, what is your answer? Dhyandev, what is your answer? Let me tell you here, option D is the correct answer. D is the correct answer. Because with first statement you can get the answer. Rudresh, as you are saying, with the first statement you will get the answer. Because if 10% of the number is 5, you can easily say that 20% will be 10. So first statement is sufficient. We can get the answer. Second statement, if you see, 40% of twice the number is 40. 40% of twice the number, if the number is x, twice the number is 40. So from here I can get the x value, I can get the number. If I get the number, I can find the 20% of that number. So second alone is also sufficient. So that is the D option. If first alone or second alone is sufficient, then D option. So you have to go for D. Clear, Rudresh? Bajrangi, Dhyandev. Okay, shall we move to the next? Let's see the next question. A thoroughly blended biscuit mixture includes only flour and baking powder. What is the ratio of number of grams of baking powder to the number of grams of flour in the mix? Yes, Dhyandev. So these are the two statements. Now tell me which option you will select. First statement, they say exactly 9.9 grams of flour is contained in 10 grams of the mixture. And second, they say exactly 0.3 grams of baking powder is found in 30% of the mixture.
Lagbir says C. C means combining both the data together. Dhyandev says C, combining both. They are asking you the ratio of baking powder to the wheat flour. Oh, sorry, whatever flour it is. They are asking you ratio. Rudresh says A. How about Bajrangi? What do you say? So let me tell you here, the answer is A. First alone is sufficient. See what they have given, 9.9 grams of flour is contained in 10 grams of mixture. So out of 10, see what we have to actually find in the question, we have to find baking powder is to flour, the ratio. Okay, so baking powder, 9.9 grams of flour is there. So 9.9 becomes this is to baking powder. Out of 10, if 9.9 is the flour, so remaining 0.1 will be the, if I am not wrong, 0.1 will be the baking powder. So from here itself we are getting the answer. Baking powder is to flour. We are getting the answer. So first statement is sufficient. Now second statement also will check it out. Yes, Dhyandev A. Second also will check it out. They are saying exactly 0.3 grams of baking powder is found in 30% of the mixture. See, 30% of the mixture. Mixture we don't know how many grams it is. If it is 1 gram, it means 3 grams will be 0.3 grams will be the 30%. If it is 2 grams mixture, in that 30% will be something else. If it is 5 grams mixture, in that 30% will be something else. They are clearly mentioning that 0.3 grams of baking powder is found in 30% of the mixture, but we don't know what is the total mixture. So second, we cannot find it out the answer. So second is not sufficient. First alone is sufficient. That is the reason option A. Rudresh was correct. Dhyandev, yes, you are correct. Lagbir, is it clear? लकबीर, मैं आपको बता दूं हिंदी में कि ये लोग पूछ रहे हैं बेकिंग पाउडर और फ्लोर का रेशियो हमें चाहिए. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्लियरली रेशियो आ रहा है कि 9.9 ग्राम्स फ्लोर होगा जब 10 ग्राम मिक्सचर होगा, क्योंकि दो ही चीज उसमें है. लकबीर क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हम 9.9 फ्लोर की जगह लिखेंगे तो 0.1 हम लिख सकते हैं कहाँ पे, बेकिंग पाउडर की जगह. तो वहीं से हमें रेशियो आ जाएगा. और सेकंड से हमें आएगा ही नहीं रेशियो, क्योंकि सेकंड में इन्होंने कह रखा है कि एग्जैक्टली 0.3 ग्राम्स बेकिंग पाउडर होगा 30% ऑफ द मिक्सचर में. तो मिक्सचर है कितना वो हमें पता होना चाहिए, तब हम 30% ऑफ मिक्सचर में ये पता कर लेंगे. तो मिक्सचर 10 ग्राम्स है, 20 ग्राम्स है, 1 kg है, किसमें वो 0.3 ग्राम्स है ये हमें नहीं पता है, इसलिए सेकंड से हम नहीं ला सकते रेशियो. रेशियो मिक्स का नहीं पूछ रहा है ना, मिक्स का नहीं पूछ रहा है. रेशियो किसका पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है आपको फ्लोर और बेकिंग का, बेकिंग और फ्लोर का. तो बेकिंग 9.9 ग्राम है और पूरा मिक्सचर 10 ग्राम है. तो पूरा मिक्सचर 10 ग्राम में सिर्फ दो ही चीज है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ओनली 2 थिंग्स आर देयर, ओनली फ्लोर एंड बेकिंग पाउडर, और कुछ नहीं है. तो 10 ग्राम्स मिक्सचर है, तो अगर उसमें 9.9 ग्राम्स अगर आपको फ्लोर है तो बाकी का बेकिंग पाउडर होगा. क्लियर बजरंगी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Is R greater than 0.27? First statement, R is greater than 1/4, and second statement, R is equal to 3/10. Clear है बजरंगी? Very good. इसमें बताइए आप क्या सेलेक्ट करेंगे. एंड लेट मी रिमाइंड यू, आज आपका क्वेश्चनर सेशन है, स्पेशल क्लास है. स्पेशल क्लास रात के 10 बजे है, 10 PM आज ही. और वो क्वेश्चनर है. स्पेशल क्लास मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री क्लास है. आपको जस्ट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है. रुद्रेश सेज डी, लकबीर सेज बी, रुद्रेश सेज बी अगेन. ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आज 10 PM आपको इसी टॉपिक का स्पेशल क्लास है, क्वेश्चनर है, टेस्ट है. तो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे. और उस टेस्ट में लेट मी टेल यू, ये 10 PM आज रात के 10 से 11 है, सिर्फ 1 आवर. ओके, 10 to 11, 10 to 11 है बजरंगी. इट इज 10 to 11. 11 PM शो कर रहा है, नहीं 10 to 11 होना चाहिए. लेट मी चेक इट आउट वंस. कहाँ पे आपने देखा?
Okay, it is 10 to 11. It is 10 to 11, 10 o'clock है, not 11 o'clock. Okay, थैंक यू लकबीर, गलती से शो हो रहा होगा. यस आई गॉट इट. तो आप 10 टू 11 है, 10 टू 11, 10 PM टू 11 PM आपका क्वेश्चनर सेशन है. उसके लिए ये भी फ्री है, तो इसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का टिल नेक्स्ट ईयर, अच्छा नेक्स्ट ईयर तक क्लास लेता ही रहूँ, बिल्कुल लूँगा, नेक्स्ट ईयर भी क्लास लूँगा, नेक्स्ट ईयर तक नहीं लेता रहूँगा. तो 10 PM टू 11 PM ये क्वेश्चनर सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो आपको जस्ट अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अमूल्य रतन आप वहाँ सर्च कर सकते हैं. यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट लाइन में भी मैं आपको हिंट दे दूंगा. नहीं रुद्रेश नहीं ले सकते हैं, बच्चे सो जाएंगे. तो एनी हाउ 10 PM टू 11 PM ये जो आपको अटेंड करना है उसके लिए आपको एक्सेस कोड पूछा जाएगा फ्री क्लास के लिए. तो आप वहाँ पे ये कोड एंटर कर सकते हैं AR10. किसी भी फैकल्टी का अगर आपको फ्री क्लास अनअकैडमी ऐप पे अटेंड करना है, लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग क्लास, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं AR10. ओके, तो यूज दिस कोड, इवन शेयर विथ योर फ्रेंड्स. यस रुद्रेश, आई गॉट इट. ओके, तो इसका आंसर आपने क्या बताया कि लकबीर ने बताया बी, रुद्रेश ने बताया बी. बाकी लोग बी मतलब सेकंड अलोन से आपको आंसर आ रहा है. मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है रुद्रेश SPDOT यूज करेंगे. वेरी गुड रुद्रेश, कोई बात नहीं, वो भी आपको वैलिड है. रुद्रेश ने एक और कोड बताया है फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए. इस ध्यानदेव का आंसर आ रहा है ई, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. मैं बता दूं आपको इसका आंसर है डी. डी आंसर है. अलोन फर्स्ट इज सफिशिएंट, अलोन सेकंड इज सफिशिएंट. फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आपको आंसर आ जाएगा. देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इज आर ग्रेटर देन 0.27. तो आर इज ग्रेटर देन 1/4 मीन्स आर इज ग्रेटर देन 0.25. 0.25 से ग्रेटर है तो इट कैन बी 0.26, इट कैन बी 0.28 ऑल्सो. सो नो, डी इज नॉट द आंसर. डी इज नॉट द आंसर. फर्स्ट से हमें नहीं कंफर्म आ रहा है आंसर, फर्स्ट से नहीं आ रहा है हमें. तो बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि r 0.25 से बड़ा है, मतलब r कैन बी 0.26, r कैन बी 0.28, r कैन बी 0.29. सो इफ इट इज 0.26 then it is no answer, but if it is 0.28 then it is yes answer. So we are not getting confirm answer with the first statement. Now moving to the second statement, r is equal to 3/10. So here you are clear that r is equal to 0.3. So yes, from here you will get the confirm answer yes. So no doubt you are correct, Rudresh and Lakbir. B is the correct answer. B is the correct answer. Very good Rudresh, very good Lakbir. ध्यान दें, B से आंसर आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट से हमें आ जाएगा आंसर. रुद्रेश का कहना है सर आई एम ऑलरेडी प्लस स्टूडेंट सो आई विल नॉट यूज योर कोड. डोंट वरी, डोंट यूज माय कोड रुद्रेश, बट एटलीस्ट शेयर माय कोड विथ योर फ्रेंड्स so that they get benefited, they get discount in the fees when they use that code. They can access the free class on Unacademy. Okay, so shall we move further? Dhyandev, is it clear? यहाँ पे B आंसर होगा, B. B is the correct answer, क्योंकि सेकंड से हमें कंफर्म आंसर आ जाएगा yes, it is greater than 0.27. Okay, moving to the next question. So next question is, what is the value of the sum of a list of n odd integers? Very good Lakbir, exactly Lakbir, very good. 20.27 से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान देव, कुछ भी हो सकता है. ध्यान देव, क्वेश्चन क्या था, क्या वो बड़ा है? और आपको वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपको वो आर की वैल्यू पूछे नहीं है, आपको सिर्फ पूछ रहे क्या बड़ा है. हाँ या ना में कंफर्म जवाब देना है. क्या आपका नाम ध्यानदेव है? हाँ या ना. अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब डेटा सफिशिएंट है, और अगर आप कंफर्म ना बोल रहे हैं तब भी डेटा सफिशिएंट है. अगर आप डाउट में हैं कि पता नहीं हाँ होगा या ना होगा, तब डेटा सफिशिएंट नहीं है. देखिए आपका कंफर्म आंसर आया हाँ, तो इसका मतलब डेटा सफिशिएंट है. बजरंगी का भी कंफर्म आंसर आया ना, मेरा नाम ध्यानदेव नहीं है, तो बजरंगी का भी जो है स्टेटमेंट सफिशिएंट है, कंफर्म आंसर आ रहा है. अगर डाउट रहता पता नहीं सर, तो कंफर्म आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं बड़ा है नहीं है. तो हाँ बड़ा है, आपको यहाँ से यस कंफर्म आंसर आ रहा है, इस स्टेटमेंट से आ रहा है यस कंफर्म आंसर, यस, नो डाउट एट ऑल.
What is the answer is not important, whether you are getting confirm answer or not, that is important. Okay, ध्यान दें. So इसका आंसर आप बताइए. What is the value of the sum of a list of n odd integers? N is equal to 8. The square of the number of integers in list is 64. Which statement is sufficient to get the answer? Sum of n odd integers we have to find. Lagbir says E. None of them. What about Dhyandev, Bajrangi, Rudresh? So what is the value of the sum of n integers? Now n value is 8. So which integer, which 8 integer it is? We are not confirmed. Integer can be, it can be 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. Then we'll get some other sum. But if it is 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 3, 6, 7 and 29. Then we'll get some other answer. Both are 8 numbers. Both are 8 integers. Dhyandev also got E. Bajrangi also got E. So first statement से आप नहीं बता सकते हैं sum, क्योंकि इसका sum कुछ और होगा, इसका sum कुछ और होगा. हमें बस इतना ही पता है. We only know with the first statement that there are 8 integers. Okay. So first is not sufficient to find the sum of the given 8 integers. Okay. Which 8 integers we don't know. The square of the number of integers on list is 64. Number of integers का square 64 है. तो 8 का स्क्वायर 60 मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स 8 है. तो यहां से भी आपको वही चीज आ रहा है. तो वी कैन नॉट गेट द आंसर. ओके. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट मींस वी हैव टू गो फॉर ई ऑप्शन. Clear? Yes, very good Bajrangi, Dhyandev, Lagbir. Good. Next question. In the given figure, if the lines K and M are parallel, what is the value of X? Y value they have given as 120 degree in the given figure and Z value as 60 degree. Two statement. In one statement they are giving you Y value. In second statement they are giving you Z value. So which statement is sufficient to find the value of X? Lagbir says C. C means together, combining. C was combining, no? Combining both the data it was. What was C? C option हम लोग डायरेक्शन में कब सेलेक्ट कर रहे थे? Combining both the data. Dhyandev says 2 only means B. Lagbir says combining both the data 1 and 2. Two only, Dhyandev says. So my dear friend, let me tell you here the answer is D. Alone 1 is sufficient, alone 2 is sufficient. Alone 1 से आपको आंसर आ जाएगा because अगर y is 120 degree, so here the vertically opposite angle, this will be also 120 degree and sum of the interior angles, it should be 180 means this will be 60 degree. So with this we can find the x value, it is 60 degree. Yes Bajrangi, D. एंड सेकंड इन्होंने क्या बोला है सेकंड स्टेटमेंट. तो फर्स्ट से हमें आंसर आ जा रहा है x की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है. वंस अगेन अगर y 120 है तो उसके वर्टिकली ऑपोजिट यहां भी 120 होगा और अगर यहां पे 120 है तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इट शुड बी 180. सो 120 तो ये आपको डेफिनेटली 60 होगा. ओके. अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में z की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू अगर 60 है तो कैन आई फाइंड दिस? यस. Alternate angles, it should be same, so it will be also 60 degree.
तो z से भी आपको आंसर आ रहा है, am I right? 1 से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से अलोन से भी आंसर आ रहा है, तो अलोन अलोन दोनों सफिशिएंट है, 1 अलोन भी सफिशिएंट है, 2 अलोन भी सफिशिएंट है। क्लियर है? Just a moment. Just please come down. Yes. Just a moment. Sorry guys. Sorry for the interruption. Got it, Lagbir. Bajrangi, clear. Very good. So the next question. If R and S are positive integers, R is what percent of S? So here what will be your answer? R is equal to 3/4 of S. R divided by S is equal to 75 by 100. Which one you will select? Lagbir says D. D means 1 alone and 2 alone. Others, what is your answer? So R and S are positive integers. R is what percent of S? So with the first statement we can say R is 3/4 of S means 0.75 of S. 0.75 of S. 0.75 means 75%. So here first statement alone we are getting the answer. Second statement they have given R by S. R by S is equal to 75 by 100. So here also you can say R is equal to 75 by 100 is 75% of S. So second statement also is sufficient to get the answer. So 1 alone is also sufficient, 2 alone is also sufficient. So we have to go for D option. Clear? No queries? Very good, Lagbir. Next question. Both statements are same, yes, लेकिन पूछ मतलब presented different way. Statement same है लेकिन presented different way. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, if 5x plus 3y is equal to 17, what is the value of x? First option, x is a positive integer, and first statement x is a positive integer, and second statement y is equal to 4x. Here what will be the answer? You have to find the value of x. By which statement data we can get the value of x? Alone 1, alone 2, 1 and 2 together, 1 alone also and 2 alone also, none of these. So Lagbir says B. B means 2 alone is sufficient, not the 1 alone. Others? So here they have given first statement, they have given x is a positive integer. So okay, if even the x is positive or negative, we cannot find the value of x till the time we don't know about y. Am I right? Now Bajrangi says D. D मतलब alone one नहीं sufficient है, तो बजरंगी D आंसर होगा ही नहीं. D का मतलब alone one भी sufficient होना चाहिए, तो फर्स्ट से तो हमें आ ही नहीं रहा आंसर. Okay, now proceeding to the second. Second they say y is equal to 4x. Y is equal to 4x. So I think two equation can be made. First equation is given in the question, that is 5x plus 3y is equal to 17, and second equation we can get from the second statement, that y is equal to 4x. So in the place of y you can place this 4x, you can get the value of x. So I think second alone is sufficient to get the answer. So Lagbir, you are correct. B is the correct answer. Second alone is sufficient. First is not at all sufficient, and even first is not required to get the answer. Yes, ध्यान दे, B. बजरंगी D नहीं होगा, B होगा. Very good, very good. So moving to the next. Is the integer k a prime? क्या k prime number है?
You have to find this K. First statement they have given 2K is equal to 16. Second statement they have given 1 is less than K is less than 4. Lagbir says D. Bajrangi says B. लकबीर का कहना है फर्स्ट अलोन से भी आ जाएगा आंसर, सेकंड 2 अलोन से भी आ जाएगा. बजरंगी का कहना है फर्स्ट अलोन से नहीं आएगा लेकिन 2 अलोन से आ जाएगा. बाकी लोग ध्यानदेव सेज ई. नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर. Okay, so let me tell you the answer. We'll check it out. I'll not say the answer before. First, we'll check it out. See, what is the question? Is the integer k a prime? क्या k एक प्राइम नंबर है? अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है? is. तो आपका आंसर कंफर्म यस या कंफर्म नो आना चाहिए. तो आप कह सकते हैं डेटा सफिशिएंट है. कंफर्म यस भी आ गया तो भी डेटा सफिशिएंट होगा, कंफर्म नो भी आ गया तो भी डेटा सफिशिएंट होगा. कोई भी एक कंफर्म आंसर आना चाहिए. ओके, नाउ पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया 2k इज इक्वल टू 16. तो k वैल्यू क्या हो गया? k की वैल्यू क्या हो गई? तो 2k इज इक्वल टू 16 मीन्स k इज इक्वल टू 8. इससे क्या आप बता सकते हैं कि इज k अ प्राइम नंबर? यस और नो. टेल मी यस और नो. k वैल्यू 8. इज 8 अ प्राइम नंबर? तो k की जगह आप 8 लगा दीजिए. इज 8 अ प्राइम नंबर? इज 8 अ प्राइम नंबर? नो. So here you are getting confirm answer no. So from this you are getting the confirm answer. It means this statement was sufficient to get your answer because you said confirm answer no. ओके, वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, बस इतना ही बताना है. तो आप कंफर्म बोल रहे हैं नहीं है. अगर आपको डाउट रहता कि पता नहीं सर हो भी सकता है प्राइम नंबर, नहीं भी हो सकता है, तब डेटा सफिशिएंट नहीं था. लेकिन यहाँ पे आप कंफर्म बता दिए कि नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब डेटा सफिशिएंट है. अब सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं. फर्स्ट अलोन से हमें आ गया आंसर. सेकंड में देखते हैं. सेकंड में इन्होंने कह रखा है कि 1 इज लेस देन k इज लेस देन 4. तो k एक इंटीजर है जो कि 1 और 4 के बीच में है. तो k 2 हो सकता है, k 3 हो सकता है. 2 और 3 कोई भी हो सकता है. तो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. इट मीन्स आप कंफर्म बता सकते हैं यहाँ पे आंसर यस इट इज अ प्राइम नंबर. यस बजरंगी. तो यहाँ पे भी आपको सेकंड से भी कंफर्म आंसर आ गया यस. मतलब 1 अलोन से भी कंफर्म आंसर आ रहा है, 2 अलोन से भी कंफर्म आंसर आ रहा है. तो जैसा लकबीर का कहना था डी इज द आंसर हियर. 1 अलोन भी सफिशिएंट है, 2 अलोन भी सफिशिएंट है. क्या करूं बजरंगी, मैं आपको हायर लेवल क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. उसके बाद गेट में आपको बहुत इजी लगे डीएस का क्वेश्चन. एक्चुअली डीएस का क्वेश्चन देखने में बहुत इजी होता है बट थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है. क्लियर है? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? ध्यान दें, इज इट क्लियर? द आंसर इज डी. लकबीर का कहना सही था, डी. तो मूविंग टू द नेक्स्ट. वाटर इज पंप्ड इनटू अ पार्शियली फिल्ड टैंक. ओके, आधा भरा हुआ टैंक में वाटर पंप हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू अ इनलेट पाइप. मतलब एक इनलेट पाइप से उसमें वाटर इनपुट हो रहा है. आधा ऑलरेडी आधा भरा है या कितना 1/4 भरा है हमें नहीं पता, लेकिन पार्शियली भरा हुआ है वो टैंक, उसमें वाटर भर रहा है. ओके, और इनलेट पाइप से वाटर पोर हो रहा है. बजरंगी क्लियर? At the same time, water is pumped out of the tank at a constant rate through outlet pipe. मतलब एक ड्रेनेज लीकेज भी उसमें काम कर रहा है. ओके, आउटलेट पाइप भी काम कर रहा है जो पानी निकाल रहा है एक सर्टेन रेट से. At what rate in the gallons per minute is the amount of water in the tank increasing? किस रेट से इंक्रीज हो रहा है पर मिनट, कितना वाटर उसमें इंक्रीज हो रहा है टैंक में, ये आपको बताना है. ओके, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया द अमाउंट ऑफ वाटर इनिशियली इन द टैंक वाज 200 गैलन. और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है सेकंड स्टेटमेंट वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 10 गैलन्स पर मिनट एंड आउट ऑफ द टैंक एट द रेट ऑफ 10 गैलन्स एवरी 2.5 मिनट्स. तो बताइए किससे आप बता सकते हैं कि पर मिनट कितना वाटर इंक्रीज हो रहा है उस टैंक में? किस स्टेटमेंट से? फर्स्ट अलोन से, सेकंड अलोन से, कंबाइनिंग बोथ से, या फर्स्ट अलोन से भी आएगा सेकंड अलोन से भी आएगा, या नहीं तो नन. तो लकबीर का कहना है यहां पे बी आंसर है. लेट मी टेल यू, आज 9 PM भी आपका यूट्यूब पे सेम चैनल पे यहीं पे आपको लीड गेट पे क्लास है.
तो हम लोग और भी क्वेश्चन 9 PM में देखेंगे। उसके बाद 10 PM के जो स्पेशल क्लास है उसमें हम लोग लीडर बोर्ड पे आएंगे। तो आज 9 PM की भी क्लास मिस मत कीजिएगा यूट्यूब पे, सेम चैनल पे। ओके, तो उसमें क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे और 10 PM की क्लास में तब हम लोग टेस्ट लिखेंगे और लीडर बोर्ड में हमारा नाम टॉप पे आएगा। तो 10 PM का स्पेशल क्लास की प्रिपरेशन आज ना रात में 9 बजे भी हम लोग करेंगे यूट्यूब पे। लखबीर बी, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। हाउ मच वाटर पर मिनट इट इज इंक्रीजिंग, हाउ मच वाटर, कितने गैलन वाटर इंक्रीज हो रहा है पर मिनट उस टैंक में, वो हमें पता करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि वाटर इनिशियली उस टैंक में 200 गैलन था। इनिशियली 200 गैलन था या 500 गैलन था, या पानी नहीं था या एकदम थोड़ा पानी था, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें पता करना है कि पर मिनट कितना वाटर इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमें आंसर आएगा ही। क्लियर है? आई एम क्लियर टू यू। अब सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 10 गैलन्स पर मिनट, मतलब उसमें ऐड हो रहा है 10 गैलन्स पर मिनट। ओके, और रिमूव हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितना, 10 गैलन्स पर एवरी 2.5 मिनट्स। तो 2.5 मिनट में अगर 10 गैलन रिमूव हो रहा है तो पर मिनट में कितना रिमूव हो रहा है ये आपको आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पर मिनट कितना इंक्रीज हो रहा है यू कैन फाइंड इट आउट। तो आई थिंक सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गेट द आंसर। अलोन सेकंड means we will go for B option. Alone second is sufficient. Lagbir, you are correct. Very good. Clear? Next question. So next question on your screen is this. Yes, Bajrangi, B. What number is 15% of x? First statement, 18 is 6% of x, and second statement, 2/3 of x is 200. वन अलोन से, फर्स्ट अलोन से अगर आपको आंसर आ रहा है, नॉट द सेकंड से, तब सेलेक्ट ऑप्शन ए। सेकंड अलोन से आ रहा है, नॉट द फर्स्ट अलोन से, तब सेलेक्ट ऑप्शन बी। 1 and 2 दोनों को मिला के, दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर आ रहा है टुगेदर में, सेलेक्ट ऑप्शन सी। 1 अलोन से भी आंसर आ जाएगा, 2 अलोन और 2 अलोन से भी आ जाएगा, तो सेलेक्ट ऑप्शन डी। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, सेलेक्ट ऑप्शन ई। तो यहां पे लखबीर का कहना है सर डी, मतलब 1 अलोन से भी आ जाएगा, 2 अलोन से भी आ जाएगा। देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, 15% ऑफ एक्स। अगर हमें ये पता है कि 6% ऑफ एक्स, 6% ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने दिया है, 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, यही इन्होंने दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। 18 is 6% of x, so 6% of x is equal to 18, that is given। तो यहां से हम x फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें x क्लियरली पता चल जाएगा तो हम 15% x का फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है टू फाइंड द 15% of x। am I right? Because if we can find x, we can find the 15% of or 20%, any percent of x we can find once we know the number what is x। तो फर्स्ट से ही हमें x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। लखबीर, इससे पहले वाला सही था लखबीर, मैंने तारीफ किया था आपका लखबीर, रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे तो रहेगा, सही था आपका आंसर। ओके, अब सेकंड, फर्स्ट अलोन से तो हमें कंफर्म आंसर आ रहा है। सेकंड, 2/3 ऑफ x इज 200, तो 2/3 ऑफ x इज 200। तो आई थिंक x की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी आपको। अगर x की वैल्यू अगर आप पता कर सकते हैं तो डेफिनेटली 15% ऑफ x ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट, मीन सेकंड अलोन से भी आपको आंसर आ रहा है। तो यहां पे हमें ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है, 1 अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट, 2 अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट। सो वेरी गुड लखबीर, डी आपने बताया, बजरंगी डी आपने बताया, वेरी गुड वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? तो और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कब, 9 PM के सेशन में यूट्यूब पे, सेम चैनल 9 PM के सेशन में। इसके आगे 11th क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और 10 PM के सेशन में हम लोग टेस्ट करेंगे स्पेशल क्लास पे, एंड टेस्ट पे हम लोग जो है लीडर बोर्ड पे हमारा नाम आना चाहिए, क्योंकि सेम टॉपिक। तो प्रैक्टिस अभी 9 PM भी होगा, और मैं आपको बता दूं कि आप AR10 ये कोड यूज कीजिए व्हेनेवर यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। ओके, ये कोड यूज कीजिए एंड शेयर दिस कोड विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट द डिस्काउंट व्हेनेवर दे आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। और मेरी आज 10 बजे की क्लास अगर आपको स्पेशल क्लास अटेंड करनी है तो आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, माय नेम इज गिवन हियर इन द लेफ्ट
bottom of the screen, Amulya Ratan, that is my name. Search this profile in GATE ESE channel on Unacademy app. You'll get this profile. Follow that profile and on the notification. So whenever I keep the special class, you'll be getting the alert through messages. Special class means it is free of cost. और किसी की भी अगर आपको स्पेशल क्लास अटेंड करनी, कोई भी फैकल्टी की अनअकैडमी ऐप पे, तो आप ये एक्सेस कोड यूज कर सकते हैं AR10. तो ये कोड वहां भी आपको वैलिड है to access the free classes of all the faculties on Unacademy. Okay, so use this code, even share this code with your friends. And let me tell you that subscribe this channel LeadGate so that you may not miss this Maha revision, any of the classes, technical as well as non-technical. So subscribe this channel LeadGate and you can attend the live classes as well as whatever the classes has been already completed. So up till 31st January, you can attend all the classes, revision classes here, if you are GATE 2021 aspirant of mechanical branch. And let me tell you that you can go through my different Facebook pages of Unacademy and different groups you can go through for getting the links of YouTube. So thank you very much. So meet you at 9 p.m. with more number of questions on data sufficiency. Thank you all. Till then, keep practicing. Okay, bye-bye. Be home, be safe. Thank you. Thank you, Lagbir. Thank you, Bajrangi. Thank you, others.